हैप्पी दिवाली भाभी जी। हैप्पी दिवाली। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। हैप्पी दिवाली। अरे ये बेटी नहीं आई? हाँ, वो नहीं आ पाई, दिल्ली में है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। अरे पर भाभी, त्योहार की रौनक तो घर की लक्ष्मी से होती है। हाँ वो तो है। आपकी बेटी ने तैयारी छोड़ दी है क्या? अरे नहीं, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। घर पर रहकर तैयारी कैसे? सुपर कोचिंग से। यहाँ पे सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी होती है, वो भी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ। फोन करो रीना को, अब हमारी बेटी भी घर पर रहकर तैयारी करेगी। बिल्कुल। हाँ, दिवाली की खुशियाँ और आपके सिलेक्शन की खुशियाँ अब साथ साथ। इस दिवाली मनाइए दिवाली अपनों वाली टेस्ट बुक के साथ। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज शेफाली सिंगला एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस जो अगस्त 2024 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। सो आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस इन दिस सेशन एंड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज वाली मास्टर क्लास में। सो दिस इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। I hope that you all are ready. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, just let me know. I'll make 1 or 2 announcements for you. Because दिवाली आ रही है तो definitely कुछ सरप्राइज तो बनता ही है. तो I'll disclose that surprise with you guys towards the end of this session. Okay? तो हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मैं 30 seconds का टाइम दूंगी. Just read the problem statement and on the basis of that try to get the answer. सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो अगस्त 2024 में आए थे, जिसमें स्टूडेंट्स एवरीबॉडी वाज लाइक कि पेपर में कट ऑफ बहुत हाई गया है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, तो आप इजीली आंसर ले सकते हैं। बट हमारा फोकस रहेगा स्पीड के ऊपर क्योंकि स्पीड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर व्हिच वाज आस्क्ड इन जून 2024, जो पेपर कैंसिल हुआ था। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रीड द स्टेटमेंट। सो दिस इज बेस्ड ऑन द सिंक्रोनाइजेशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, you know that what is mutual exclusion and what is the purpose of using the mutual exclusion, तो easily आप इसका आंसर ला सकते थे। very good afternoon शुभम। so here they are saying that which of the following statements are true about the mutual exclusion in the concurrent programming. Concurrent programming means जब आपके पास multiple processing running state में होते हैं, then they are known as the concurrent processes. अब concurrent programming में problem क्या आती है? Sometimes these processes may interfere with the execution of each other. तो एक दूसरे processes की execution के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उस केस में हम कुछ सिंक्रोनाइजेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। सो वन ऑफ दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन मींस अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं which are using the same resources, that same resource can be the code or it can be anything, और कुछ common variables हो सकते हैं, कुछ common part हो सकता है code का, so that might be shared by multiple processes. So if they are going to modify it, हो सकता है कि आपके पास results correct नहीं आए, or if multiple processes are executing the shared code at once, then it may create the problem. So in order to avoid this, there is a concept of the mutual exclusion. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि क्रिटिकल सेक्शन जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड कोड और शेयर्ड वेरिएबल्स को रख रहे हैं, सो दैट इंडिकेट्स दैट कि जो शेयर्ड वेरिएबल्स या कोड्स है एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सके। सो दिस मीन्स दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस the code or the resources available in the critical section. तो ये main idea है behind the critical section. So we can say that, so now they are asking that which of the following statements are true. So mutual exclusion ensures that only one process can be in the critical section at any given point of time. So undoubtedly yes, the statement is
true. यही मतलब है mutual exclusion का, so this is true. Mutual exclusions are designed to prevent the conflicts. ये conflicts को prevent कर रहे हैं और ensure कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही process shared resources को at a time access कर सकते हैं. Exactly, yes. So that is why we are keeping these resources in the critical section. So even this statement is also true. Mutual exclusion can use various algorithms to ensure that processes do not enter into the critical section simultaneously. In fact, this statement is also true. We have learned so many algorithms in the synchronization. Then we have mutual exclusion allows multiple processes to access the critical section simultaneously to improve the performance. Performance improve करने के लिए concurrent programming है, but in that case multiple processes cannot access the resources in the critical section. Mutual exclusion का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही process critical section में जाएगा. So this statement is false. So only statement A, B and C are true. So we can say that correct answer for this question is A, B, C. बिना किसी conflict के option A is the correct answer for this question. I hope that this is clear. तो कुछ भी नहीं था, synchronization के ऊपर था. Next question is on the basis of the CPU scheduling algorithms. तो आपको लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स वाज गिवन टू यू और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन थे और आपको मैच करना था कौन से एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो दिस वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मींस जो प्रोसेस पहले आए हैं पहले उसी ऑर्डर में सर्विस मिलेगी, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव. सो दिस इज फॉर 1 के लिए क्या आ गया आपके पास, A के लिए it is 3, A के लिए it is 3. So on the basis of this we'll eliminate the option 1 and 2. Then shortest job first, it selects the process. Shortest job first means जिसको सबसे कम burst time चाहिए, that process will be taken first. So here the selection criteria is the burst time. So it selects the processes for the execution with the smallest burst time. So for B it is 4. Anyhow option 3 और 4 में दोनों में 4 आ रहे हैं. Then round robin. Round robin क्या करते हैं, based on the time slice जिसको हम time quantum बोलते हैं, time slice बोल सकते हैं. So this gives the fair chance to all the processes to execute. So it is responsible for fair allocation of the CPU time by assigning the time slice or the time quantum. Clearly this is the characteristic for the round robin. So C के लिए 2 आ गया. So on the basis of this option 4 is also eliminated. Priority scheduling means based on the priority of the process आपको arrival time burst time के साथ साथ priority भी given होती है. So based on the priority of the process each process will be scheduled. So each process is assigned a priority in the priority scheduling. नाम से relate करके देखो तो priority किस में आएगा, priority scheduling. So for D it is 1. So that is option 3. Correct answer for this question is option 3. यहां तक कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था. तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास 2024 अगस्त में आया था that was based on synchronization. It was based on synchronization. And next question was on CPU scheduling. तो हमें मालूम है जब हमारे पास क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है तो CPU scheduling का इक्वेशन पक्का आना ही आना होता है. सिंक्रोनाइजेशन से इक्वेशन बनता है, मेमोरी मैनेजमेंट से इक्वेशन बनता है, डेडलॉक से इक्वेशन बनता है. तो जो डेडलॉक से इक्वेशन आया था अगस्त 2024 में that was comprehension based which we'll be discussing in the master class. तो वहां पे आपको एक comprehension given था related to the deadlocks and on the basis of that 5 questions were asked that we will be discussing in today's master class. Anyhow, after that we are given with one question. This is based on the basics of the operating system. Here also बेटा इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है कि आपसे ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है या नॉट फॉल्स पूछा है. कई बार नॉट ट्रू दे देते हैं तो वो जो पूरा क्वेश्चन होता है उसका मतलब चेंज हो जाता है. रादर देन आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स दे आस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू. Okay, so anyhow don't worry, in this question they had asked for the true about the privileged instructions.
So which of the following statements are true about the privileged instructions? This is saying that it can only be executed by the operating system kernel. Since this is the privileged instruction, तो obviously बात है कि ये instruction सिर्फ और सिर्फ operating system kernel execute कर सकता है. These cannot be executed by the user applications. So statement A is true. On the basis of this only, I can eliminate two options. B तो आ ही रहा है अब दोनों में, तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली आप अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Option B is saying that statement B is saying it is designed to perform the operations that can directly affect the hardware and or the system state, such as the IO operations or changing the memory management settings. So 100% the statement is also true. Then user applications can execute. Here we are saying that these privileged instructions cannot be used by the user applications. C में क्या बोल रहे हैं? User applications can execute the privileged instructions if they have correct permissions or set by the operating system. User applications cannot be able to execute the privileged instructions. So the statement is false because this is in contradiction to statement A. It is usually executed in the user mode. User mode में कभी भी आपके पास privileged instructions execute नहीं हो सकती. So even this statement is also false. So we can say that the correct answer for this question is it's option 1, that is A and B. So I hope that जितना भी मैंने explain किया है related to these three questions, this is clear. तो डेफिनेटली जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर अगस्त 2024 इतनी हाई कट ऑफ के बाद भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, देन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस and don't miss to receive your assistant professor kit. So those who have qualified the exam, so Testbook is distributing the assistant professor kit. ये नहीं है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल रही है. So in this case, you will get the Amazon gift voucher, free PhD admission mentorship, post qualification career guidance, and free entry in the discussion panel with the assistant professors and PhD holders. This will help you in your career and जो भी आपको एग्जामिनेशन के बाद आपको स्टेप्स लेने हैं, whether you are looking for the job for of the assistant professor or you are interested in the PhD, so you will get the complete guidance along with the Amazon gift voucher. Moreover, currently the sale is also going on the Amazon, so you can take the benefit of this. तो इस सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. जस्ट fill that link. In that basically you are sharing your result, and after sharing your result with us, you will get this assistant professor kit. एंड बाय एनी चांस जिन लोगों का क्रैक नहीं हुआ तो मायूस होने की जरूरत नहीं है. इन अनदर 2 months वी विल अगेन बी राइटिंग द यूजीसी नेट. तो फॉर दैट वी हैव लॉन्च द बूस्टर कोर्स. This is the quick revision course in which we will be having the quick revision of the important topics. All these sessions will be in the live classes. So live and recorded classes आपको मिलेंगी, high quality topic wise practice questions, fully solved previous year papers, mock test series with detailed discussions, detailed solutions as well. इसके अलावा जो अगर आपके कुछ भी यूनिट्स पेंडिंग है जो आपको डिफिकल्ट लगे थे या फिर आप पेपर में छोड़ कर गए थे, तो आप उनको कवर कर सकते हैं इन द फुल फाउंडेशन कोर्स एज वेल. सो अंडर दिस booster course you will also get the free access to the full foundation course. So already some units are ongoing, so you can take the benefit of that, and apart from that you can follow the recorded sessions. अगर unit खत्म हो चुका है तो आप recorded sessions देख सकते हो और revision आप live batch में join कर सकते हो. सो इसके लिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. सो क्विकली ज्वाइन दिस so that you can also get the benefit and आपका बहुत ज़्यादा loss नहीं हो, and you can get the positive results like others. आपको भी kits receive हो after the result. Alright, let's go for the next question. Which of the following statements are true about the process control block? So what is process control block? So in this case, again, we have to consider the PCB
PCB से related हमें true statements बताने हैं, it's not true. So which of the following statements are true about the process control block? So process control block is nothing but that contains the information related to the process, like the process ID, process state, what are the list of open files, resources, memory management information. So जितनी भी information required है related to the process, कौन से instruction execute कर रहे हो, which next instruction will be executed, that is the program counter. All this information is related in the PCB. जैसे कोई भी प्रोसेस रन करता है, सम ऑफ द फील्ड्स ऑफ द पीसीबी गेट्स अपडेटेड, तो इसीलिए जब स्विचिंग होती है, प्रोसेस स्विचिंग होती है, then switching time is considered, because during the switching time it is going to load and store the instructions, the PCB. So PCB contains the information about the process state, like whether the process is in the running state, ready state, waiting state, terminated state. So exactly, yes, process state is one of the field in the process control block. So statement A is true. Process PCB includes the program code and the data segments of the process. क्या program code और data segment को include करते हैं? Obviously not. So this statement is false. This statement is false. So B cannot be included. B is not included. B is not included because the statement is false. So we have already got the answer. Let's see what option C is saying. The PCB stores the process's memory management information such as the page tables and the segment tables. Is it storing the information related to process memory management? 100%. This is also true. The PCB is used to track process scheduling information and CPU registers, that is list of registers, list of files. So this is going to keep the scheduling information as well. So this statement is also true. That means A, C, D is true. So that is nothing but option 3. तो सिर्फ आपके पास system statement B गलत था, because in that case it is saying that this is going to store the code and the data segment, which is obviously not true. Next one, in software configuration management, what is the primary purpose of the version control? Version control का क्या purpose होता है? Is it to control the changes made to the software? जब आपके पास next version आता है किसी भी software का, तो उसमें क्या होता है? It is going to make some changes. It is going to add some updates in the existing version of the software. So this is going to control the changes made to the software. This seems to be correct. To document user requirement, for that we do not use the version control. To estimate the project cost, obviously not. To design the software architecture, obviously हम नया software नहीं बना रहे हैं, we are just making the changes to the existing software. So to control the changes made to the software, this is also correct. All right, next one is काफी सारे match the following आए थे, so operating systems में से ही this is the second match the following question. तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, लाइक पेजिंग, लीस्ट रिसेंटली यूज, सी स्कैन, वर्चुअल मेमोरी. तो इसमें से कुछ तो वर्चुअल मेमोरी के एंड वन इज फ्रॉम द मेमोरी. सो दिस वाज द मैचिंग क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड था, मेमोरी मैनेजमेंट के बेसिस पे थे ये सारे कॉन्सेप्ट्स. और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है. सो कैन यू टेल मी दैट which of the following is the correct answer? पेजिंग का काम क्या होता है? टू मैप, बिकॉज इन द पेजिंग सीपीयू इज गोइंग टू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस. सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस. So basically logical address is the address which is CPU generated, and the purpose is to map it with the actual memory address. Actual memory address means physical address के साथ map करवाना है. For that we maintain here the page table. This will return the frame number and so on. So this way paging works. So we can say that paging is nothing but that is the mapping of the logical to the physical address. So that is paging. A के लिए क्या आ गया? 3. So on the basis of this, first, third and fourth option is eliminated. Least recently used,
This means that this is going to pick the frame number which is least recently used process. So for B, it is 1. For B, it is 1. Already on the basis of A and B, we have got the answer, that is 2. C scan, this is nothing but this is the circular scan. So this is circular disk access. And virtual memory is nothing but this is the extended physical memory. So it gives you the illusion that the size of physical memory is more, but actually that is the extended memory. So जब भी आपके पास कोई page की request आती है that is not available in the main memory, then the trap will be sent to the operating system. Then it will load that particular page from the secondary memory to the main memory. अगर main memory full है तो वहां पे existing किसी पेज को replace करता है, and there comes the concept of the page replacement algorithms, जिनमें से एक replacement algorithm कौन सा है, least recently used. So anyhow, virtual memory is nothing but this extends the physical memory. So D के लिए आपके पास 2 आ गया. For D it is 2 only. So correct answer for this question is, this is not correct. So correct answer for this question is its option 2. So this is about few questions. मैंने सिर्फ एक जो comprehension based question था August 2024 operating system के basis पर, I have not discussed that question because that question will be discussing in the master class. Okay? तो उस क्वेश्चन को हम आज की मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे. फॉर दिस सेशन दिस इज ऑल. As already I have announced, we have launched the booster course after the declaration of the result. Result declare होने के बाद हमने booster course launch किया है. This is the revision batch. तो इसमें अभी एक ही क्लास हुई है. जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है and you want your result, like you want to qualify assistant professor or JRF, then surely it's going to be very beneficial for you. आपके लिए काफी beneficial रहेगा because इस बैच में आपको live और recorded classes मिल रही हैं, practice test मिल रहे हैं topic wise, fully solved previous year papers, quick revision of the important concepts in the live session and mock test series with the detailed solution, plus foundation batch वाले सारे sessions मिलेंगे. जो यूनिट्स कवर हो चुके हैं वो सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, और जो ऑनगोइंग यूनिट्स है आप उनको लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं. I'll discuss the schedule, and the best thing is this is the way to say happy Diwali from Testbook. So for you guys, we have the Diwali sale. This is for the limited period because Diwali is on Thursday. So under this one, you will get the subscription for the December examination for just 4499, 4499, that is 4500 rupees में मिल रहा है till the December examination. But I guess better one is to go for June. अगर आप first time attempt कर रहे हो, then to be on safer side, I would recommend to go for June. क्योंकि जून के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, then in that case you just need to pay 3000 extra. तो उसमें आपको 6 months का additional subscription मिल जाएगा. अगर आप जून वाले सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, then you just need to pay 7499. And if you are going for 15 month subscription more than 1 year, that means आप next December पे target कर रहे हो, December 2025 पे target कर रहे हो, then you just need to pay 10,399. This is the best offer that is currently going on. But एक request है बेटा, don't ever make the payments. अगर कोई बोले कि इस number पे payment कर दो और आपको subscription मिल जाएगा, तो बहुत सारे frauds हो रहे हैं, आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं announce कर रही हूँ. या तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, either make the payment through that, or the best way is go to the टेस्ट बुक सुपर कोचिंग. वहां पे जाके बूस्टर बैच में जाके पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, दैट इज द ऑथेंटिकेटेड वे ऑफ डूइंग द पेमेंट. ये आप अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू गेट टू नो मोर अबाउट द बूस्टर, then you can join the class or you can follow the orientation session. उसमें मैंने पूरा सिस्टमेटिकली डिस्कस किया कौन से यूनिट पे कितने रिवीजन सेशंस होंगे, व्हाट विल बी कवरिंग इन द रिवीजन सेशंस. एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन डिटेल इन द ओरिएंटेशन सेशन जो लास्ट वीक ही हुआ था. सो यू कैन गो थ्रू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, तो मेरी इमेज के नीचे आप देखेंगे वहां पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज फॉर द सपोर्ट. अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी या आपको सपोर्ट चाहिए, देन यू कैन मेक अ कॉल ऑन दैट नंबर. So in order to get the benefit of this sale, आपको एक promo code चाहिए.
that is Shefali S. This is also mentioned in the description box as well. So use this promo code to join the booster batch, and definitely फटाफट से join कीजिए because today we'll be having the first practice session on the data structures and algorithms. Apart from that, if you guys have any more queries, you can send your queries on the Telegram group. This is my Telegram group, which is given on the top right corner of the slide. And YouTube पे जितनी भी classes ले रही हूँ मैं English में ले रही हूँ, हिंदी and English, तो उसके लिए हमारा channel है Super Coaching UGC NET JRF by Testbook. So every Monday, Wednesday and Friday, we are having the free classes. Monday, Wednesday and Friday, we have the free classes from 1 p.m. on YT YouTube, and मास्टर क्लास जो टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पे होती है दैट इज एट 3 p.m. जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो अगस्त 2024 में पूछे गए थे. दिस सेशन विल बी एट 3 p.m. And if you are going to get the subscription, तो जो paid classes हैं, I'm just discussing the schedule of paper 2. इसके अलावा paper 1 की भी daily classes होती हैं. I'm just sharing the schedule of paper 2. So under the paid batch, we have one class in the morning at 10. तो ये जो paid classes होती हैं, ये 2 hours की होती हैं to 12. Then 4 p.m. to 6 p.m. This is for foundation. And after that, we have the booster class at 7 p.m. 7 to 8 p.m. we have the booster class. तो अगर आपने अपने यूनिट्स रिवाइज करने शुरू कर दिए हैं, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके कंसर्न्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, यू कैन आस्क दैट इन द बूस्टर क्लास. तो लाइव बैच है, ये सारे के सारी लाइव क्लासेस हैं. In the next session that will be on Wednesday on YouTube, I'll be discussing the UGC NET questions which were asked in August 2024. यूनिट 2 के बेसिस पर. यूनिट 2 था आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर प्लस डिजिटल है. सो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2 इन द वेडनेसडे सेशन. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपकी तरफ से कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. जो लोग इस चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक द वीडियो, ताकि आपको इस तरीके के सेशंस मिलते जाएं. एंड इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन, click on the bell icon and join this telegram group, क्योंकि इसमें जितने भी फ्री सेशंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, सारे सेशंस का लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है. So all the important information जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, everything is given in the description box. Just go through it, follow the links because ये authenticated है, तो आप इन्हीं links को follow कीजिएगा. Don't do the payments here and there. Okay. So this is all about this session from my side. I'll see you guys at 3 p.m. in the masterclass. Till then, take care. Bye-bye.